लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2 ऑफ सीक्रेट ऑफ पिवोट बॉक्स। आपका राइटर है फ्रैंकलिन ओचोवा। तो चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, और चैप्टर 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 इंगेजिंग द सेटअप। कुछ सेटअप्स, कुछ बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने और कन्विक्शन देता है कि भाई मार्केट में इन करने हम जा रहे हैं। तो देर 1 2 3 4 5 कन्विक्शन अगर मिल जाए तो वो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज जो है विन होने की वो बढ़ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2 इंगेजिंग द सेटअप। आई मे प्लंज और आई मे बाई 100 शेयर, बट इन ईदर केस आई मस्ट हैव रीजन फॉर व्हाट आई डू। तो राइटर साहब का ये स्टार्टिंग होता है, मार्केट प्रोफेशंस rely solely on price behavior to clue entries into the market, having keen understanding of the market dynamics, the type of market days, and the ability to recognize early market tendencies are usually enough to trigger a well-informed entry into the market for this group of traders. पहले भी इन्हीं बातों को बताया जा चुका है कि कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डायनेमिक्स बहुत ही जरूरी है। टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अर्ली। जितना जल्दी से जल्दी मार्केट का टाइप, मार्केट का डायनेमिक्स रिकॉग्नाइज हो गया, देन कंफर्टेबली अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम लोग कैपिटल डिप्लॉय करके बैठ सकते हैं। हाउएवर हैविंग क्लियरली डिफाइंड सेटअप्स पॉइंट टू नो, यहाँ भाई यहाँ से पता रहना चाहिए, देयर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एट द रेडी can prove to be quite helpful when prospecting entry opportunities. In the following session, I will uncover some of my favorite technique candlestick setup that have proven to be extremely powerful during my trading career. Each setup represents certain market behavior and psychologies that, when paired with the clearly established overvalued and or undervalued areas, can prove to be quite powerful. जाहिर सी बात है, ओवरवैल्यूड है, अंडरवैल्यूड है, वहाँ पर अगर एक कुछ एक पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक के द्वारा, तो ये कन्विक्शन देता है ट्रेड को। एज यू प्रोसीड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, यू विल सी exactly how I use each of these setup to confirm entry point at important pivot levels, which includes the money zone, floor pivots, and Cambrella equation. Before we begin, however, let's take a look at the basic of a candlestick. So ये जो राइटर हैं, इनका जो कोर कंसेप्ट है वो जाता है एंट्री पॉइंट, इनको देख के करते हैं ये पिवोट लेवल्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनी जोन, मेरा भी फेवरेट है ये मनी जोन, फ्लोर पिवोट्स, कैमरेला इक्वेशंस। तो जब भी वो एंट्री लेते हैं तो इन पॉइंट्स को, इन इंडिकेटर्स को दिमाग में रखकर एंट्री लेते हैं, और उसके साथ कैंडलस्टिक एनाटॉमी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ ए कैंडलस्टिक। इमेजिन समवन इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब टू यू द ब्रिलियंस एंड energy that is New York City Square through the use of hand-drawn black and white stick figure. कोई भी स्टॉक है उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक और वाइट फिगर के द्वारा, it goes without saying that the inability to capture the essence of the time square using this method is quite an understatement. Now imagine the same person hands you a photograph of Times Square. This full color snapshot immediately conveys the energy and vividness that Times Square embodies. This is the difference between the standard bar and the candlestick chart. So ये है डिफरेंसेस है जहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट जो है मोर इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है ट्रेडर को विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बार चार्ट। सो कैंडलस्टिक चार्टिंग वाज pioneered by the Japanese century ago, but it only recently became popular to the Western trader, in part to the work by Steve Nishon, who wrote Japanese candlestick charting technique analysis, and it immediately became one of my favorite book. Another book, Candlestick Charting Explained by the Gerk Morris, has also been a favorite in my library. Both of these comprehensive resources have been paramount to my understanding and use of candlestick technique. So, अब बात करते हैं हम लोग candlestick chart displays the same data as a typical bar, open, high, low, close, but conveys the information in a more visually appealing manner. दोनों वही डेटा डिस्प्ले कर रहा है, बट इसका विजुअलाइजेशन मोर अपीलिंग है। This allow for quick and effective judgment of price relationships and the inherent market psychology contained within each candle. So यहाँ क्या है, ट्रेडिंग पहले भी बात कर चुके हैं, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ रिकॉग्नाइजेशन।
जितना जल्दी रिकॉग्नाइज कर लें, रिकॉग्नाइज करने के लिए कैंडल स्टिक का सहारा लिया जा रहा है पिवोट का, मनी जोन का, राइटर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पर राइटर्स के द्वारा कैंडल स्टिक के बारे में बताया जा रहा है, तो उनका कहना है कैंडल स्टिक जो ट्रेडिंग है वो गेम है रिकॉग्निशन का, और कैंडल स्टिक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द ट्रेडर दैट consistently recognize profitable pattern in the market ahead of the crowd will be those that prosper in this game. Candlestick charting allows you to quickly gauge current market sentiment and anticipate potential price movement, which is essential to profitable trading. Once you become familiar with the candlestick, there is no way you will turn back to boring bar chart. एक बार जब familiar हो लिए candlestick के साथ तो फिर वापस नहीं जाओगे. Take a look in the figure 2.1, which illustrates the anatomy of the bullish and bearish candlestick. The portion of the candlestick that span from the open price to the close price is called the body. If the close price is above the open, that is C is greater than O, the candle is typically colored white or green to denote a bullish sentiment. If the close price is below open price, that is C is less than O, the candle is typically colored black or red to denote bearish sentiment. The top and bottom of the candlestick denote the high price and low price of the bar respectively. If the high or low is beyond the limit of the body of the candle, then the wick is present, which is also called a shadow or tail. The distance between the low and high of the candle is called the range. तो जहाँ ये wick मतलब end to end जो है ये range है, बॉडी कहाँ है क्लोज और ओपन, वो बॉडी होगा, ओपन या क्लोज और ओपन के बीच में बॉडी होगा, हाई और लो जो होगा वो रेंज होगा कैंडल स्टिक का. नाउ कैंडल स्टिक कम इन ऑल शेप, साइज एंड कॉम्बिनेशन. Your ability to quickly recognize together the market's puzzle using this vital information will extremely beneficial to you for your trading success. Now that we have covered the basic of candlestick, let's proceed to meet the chapter. So basic हम लोगों ने जान लिया कैंडलस्टिक का, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से. कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बेनिफिशियल है हमारे ट्रेडिंग करियर को इम्प्रूव करने के लिए. द फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न दैट आई विल डिस्कस इज द वीक रिवर्सल सेटअप, which is a pattern that can spotlight some of the best reversal opportunity in the market. If you have ever studied market top and bottom and reversal, you will notice that a higher percentage of these cases, the chart peppered with weak reversal candlestick at the integral point in the chart. A single reversal week may highlight an opportunity, while other times a gang of reversal week in succession will be screaming a reversal. When properly qualified, there is no doubt that this pattern can be a powerful tool in your trading arsenal. मतलब भैया कैंडलस्टिक का जो वीक रिवर्सल पैटर्न है अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में डाल लो. रिवर्सल के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉटम हाई कोई मार्क रिवर्सन टॉप फाइंड करने के लिए. द वीक रिवर्सल सेटअप इज वन ऑफ द मोस्ट विजुअली कंपेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ड्यू टू इट्स लॉन्ग प्राइस टेल which helps to highlight major reversal opportunities in the market. देखने में दूर से ही दिख जाएगा ये पैटर्न. सो अब ये पैटर्न और इसका साइकोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे. तो पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है? विद द कैंडल पैटर्न इज नोन द एंड extremely elementary, I feel it is necessary to identify and explain the key components that make for a successful weak reversal opportunity. As these factors can be easily overlooked, in my opinion, there are three factors to be considered when reviewing a reversal weak candlestick. The body, the size of the wick in relation to the body, and close percentage, which is where price closes in relation to the range of the candle. In the figure 2.2 illustrates that these components. So इसका क्लोज परसेंटेज मतलब बॉडी, ये जो बॉडी बना है ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल का बॉडी है. बॉडी साइज का जो परसेंटेज होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ द होल रेंज, बॉडी साइज का जो परसेंटेज होगा विद रिस्पेक्ट टू द होल रेंज, ये कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस बुक. As you recall, the body of the candlestick is the portion of the bar that is span from the opening price to closing price. The body of the candle is used to calculate the size of the wick. Traditionally, you would like to see a wick that is at least 2 times the size of the body. Therefore, if the range of the body of the candlestick is 10 ticks, then the wick has to be at least 20 ticks to arrive at the traditional 2:1 ratio. मतलब बॉडी अगर एक है तो वीक कम से कम 2 होना चाहिए. सो 2:1 के रेशियो. While technically you only need a ratio for a candle to be considered a reversal week, I usually like to see a higher ratio from 2.5:1 to 3.5:1. मतलब
राइटर साहब ट्रेडिशनली चलता आ रहा इस प्रकार के कैंडलस्टिक के परसेंटेज से खुश नहीं है। उनको कम से कम 2.1 मतलब बॉडी से वीक का जो डिफरेंसेज है मिनिमम 2.5 टाइम्स टू 3.5 टाइम्स उनको चाहिए, तब उनके दिल में सुकून मिलेगा और वो ट्रेड लेने के लिए बढ़ेंगे। दिस अलाउज यू टू एलिमिनेट सम ऑफ द वीकर रिवर्सल कैंडल्स बट डजंट लिमिट यू बाई बीइंग टू रिजिड। ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना, देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा टाइम्स हम डिमांड करेंगे बॉडी के साइज से वीक के साइज को, उतना नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी गिरता जाएगा, जाहिर सी बात है। बिकॉज यू आर एलिमिनेटिंग लोअर रेशियो कैंडलस्टिक वाइल ओनली ट्रेडिंग विद द रेशियो। अगर 1:5 या 5:1 के रेशियो में है, मतलब बॉडी साइज अगर 1 है तो वीक साइज 5 है, दैट डजंट अपीयर इन द मार्केट वेरी ऑफन। अगर ऐसा मिल गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो बनाया भी जा रहा है इस प्रकार के पैटर्न को ऑपरेटर के द्वारा। सो कहाँ पर घुसना है ये भी बता दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंडलस्टिक इज सफिशिएंट, हमें कैंडलस्टिक के साथ लोकेशन चाहिए और फर्दर कंफर्मेशन चाहिए। बहुत सारी कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग ट्रेड के लिए प्रस्थान करेंगे। सो द लास्ट कंपोनेंट ऑफ रिवर्सल वीक कैंडलस्टिक इज द क्लोज परसेंटेज। क्लोज परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। While the length of the week is the first part to determine the strength of the reversal candlestick, the second part क्या है of the equation is determined upon where the bar closes in relation to the overall high and low of the candle. Therefore, if the bar closes in the top 5% of the candle, the chances are greater for a bullish reversal than if the bar closes in the top 35% of the candle. Let's say in the figure 2.3 में हम देखेंगे कि ये जो परसेंटेज है 35% है, मतलब यहाँ से कोई मतलब प्राइस नीचे क्यों रहा है, इसको पुल बैक करके यहाँ तक ले गया गया प्राइस को, यहाँ से और जो हाई है मतलब इस कैंडल का क्लोज और इस हाई के बीच का जो परसेंटेज है इस पूरे कैंडल के रिस्पेक्ट में ये 35%। बट इन केस ऑफ यहाँ से इस प्राइस को पुल करते हुए यहाँ से ये रेड छोड़िए इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया गया और ये मात्र 5% दूर रह गया अपने हाई से। सो ये दिस वन इज़ द मोर बुलिश देन दिस वन एंड द सेम केस बन के आता है आपका बियर्स में भी। सो अगर हम लोग पिन बार कैंडल देखते हैं ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर, वो ज़्यादा पावरफुल होगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेड वन, और डाउन साइड में रेड वन ज़्यादा बुलिश होगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीन वन। सो परसेंटेज यहाँ पर जो है 35% है और यहाँ 5% है, क्योंकि इसके लो के ये नज़दीक है इसका क्लोज और इसके लो के इस क्लोज जो है 35% दूर है। दैट्स वाई दिस वन इज़ मोर पावरफुल दैन दिस वन। सो ये कहना चाह रहे हैं, इसे ही क्लोज परसेंटेज कहते हैं, मतलब कहाँ पर क्लोज हुआ है ये कैंडल विथ रिस्पेक्ट ऑफ हाई एंड लो। सो इसके आधार पर जो है बताना चाह रहे हैं राइटर साहब। इफ कैंडल स्टिक क्लोजेज in the top 5% of the bar with the week on the south side of the candle, this means the bulls were able to rally the market from the low of the candle and close price near the top of the bar, taking complete control from the wear in its own time frame. However, if the market closes in the top 35% of the candle, this means the bulls were still able to take control from the bears, but only marginally, since the close of the bar barely made it above the midpoint of the range. This is still a bullish scenario, but not as bullish as 5% scenario. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5% वाला दिखे ट्रेड के लिए हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ 35%. So it is important to emphasize the different component of the reversal weak candlestick as varying condition which led to varying level of success with this pattern. As I mentioned before, this pattern may seem elementary at face value, but it is actually quite complex when you begin to work with the interrelated percentage of 45% is going to give you vastly different result from a reversal week that has 3.5 ratio 1 and a close percentage of 10%. Understanding this concept will allow you to focus your energies on the right mix of component variables that make for a profitable outcome. Moreover, finding the best reversal weeks at important undervalued or overvalued areas will be vital to success with this pattern, which will be a theme throughout the remainder of the text. So writer यहाँ पर लास्टली बोल गए हैं कि moreover finding the best reversal week at important undervalued and overvalued. लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये रिवर्सल बनता है, ओवरवैल्यूड पे बनता है, अंडरवैल्यूड पे बनता है, कौन से लोकेशन पे बनता है, इन दोनों के बीच पे बनता है, छोड़ दो, लेने की ज़रूरत नहीं है, बनाया तो जाता ही है, लेकिन
इसकी प्रोबेबिलिटी विन की सही लोकेशन पर ही होगी, इधर उधर नहीं होगी. सो with the vital to the success with this pattern which will be theme throughout the remainder of the days. Now अब हम लोग समझेंगे पैटर्न समरी, ठीक है, किस प्रकार, और इसकी पैटर्न साइकोलॉजी, ठीक है. क्या पैटर्न समरी है, किस प्रकार का कैंडल हमें चाहिए. द बॉडी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द रिवर्सल वीक दैट इज between 2.5 to 3.5 times larger than the size of the body is ideal, ठीक है. सो हमें जो है 2.5 से लेकर के 3.5 के बीच में चाहिए. वीक का जो साइज है विथ रिस्पेक्ट ऑफ बॉडी हमको 2.5 to 3.5 चाहिए, ठीक है. फॉर ए बुलिश रिवर्सल वीक टू एग्जिस्ट द क्लोज ऑफ द बार शुड फॉल विद इन द 35% टू ओवरऑल रेंज ऑफ द कैंडल. मतलब दूसरी बात ये कहना है कि कम से कम 35 क्लोज परसेंटेज जो होना चाहिए वो लेस देन 35% होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 45% हो जाए, उस केस में 45%, उस केस में प्रोबेबिलिटी है बट लेस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. और तीसरा जो पॉइंट है पैटर्न समरी का, फॉर द बियरिश रिवर्सल वीक टू एग्जिस्ट द क्लोज ऑफ द बार शुड फॉल विद इन द बॉटम 35% ऑफ द ओवरऑल रेंज ऑफ द कैंडल. सेम लगभग सेम. तो 35% जो है उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हाइट लो, उसका 35% के अंदर में चाहे तो उसका क्लोज बनना चाहिए. सो नाउ अब है बात करते हैं कि इस प्रकार के कैंडल बनने का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट साइकोलॉजी क्या है. विदाउट साइकोलॉजी जो पैटर्न यहाँ जनरेट होते हैं ड्यू टू द ओनली ड्यू टू द ट्रेडर, ठीक है, बायर और सेलर, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं कि बायर और सेलर के द्वारा इस प्रकार की साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है. हम लोग फिगर 2.4 में देखेंगे. सो सेवरल रिवर्सल बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल वीक कैंडल्स है दैट कैन ऑल्सो दैट कैन ऑल सिग्नल प्रॉफिटेबल रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज. सारा का सारा अपॉर्चुनिटीज को दिखा रहा है इन द मार्केट, स्पेशली इफ दीज पैटर्न आर पेयर्ड विद द की पिवोट लेवल. अगर इसको लगा देते हैं की पिवोट लेवल पे तब तो लोकेशन भी मिल गया. इन ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक jargon, this particular candlestick would be the name ranging from hammer, hanging man, inverted hammer, shooting star, gravestone doji, dragonfly doji, depending on where the candle is placed in a trend. Now you can see why I simply call these candlestick weak on even tails instead of fumbling over the proper naming of these candlestick. I believe more to know what these pattern represent. What are they telling you? कहने का मतलब है क्या कहना चाहता है ये पैटर्न, वो इम्पोर्टेंट है. उसके नाम जान के क्या करेंगे, नाम जान करके करना क्या है. तो नाम जान कर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एक्चुअल पॉइंट है कि हमें वीक चाहिए. वीक रिवर्सल कैंडल का बात कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी वीक रिवर्सल कैंडल का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर. सो व्हेन द मार्केट हैज़ बीन ट्रेडिंग लोअर देन सडनली फॉर्म ए वीक रिवर्सल कैंडलस्टिक, the likelihood of a reversal increases since the buyer have finally begun to overwhelm the seller. Selling pressure rules the decline, but responsive buyer enter the market due to the perceived undervaluation for the several week to open near the high of the candle. Sell off sharply intra-bar and then rally back towards the open of the candle is bullish, as it signifies that the bears no longer have control since they have not able to extend the decline of the candle or the trends. Instead, the bull were able to rally the price from lows of the candle and close the bar near the top of its range, which is bullish at least for one bar, which hasn't been the case during the bearish trend. Let's see in the figure 2.5. एयर स्टेज है ये, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज. मतलब अगर कैंडल बन रहा है, बड़े बड़े कैंडल, ये मारो जो कैंडल बना रहा है, मतलब बियरिश ट्रेंड चल रहा है. ये सेकंड स्टेज है, मतलब अब बायर्स इंटर हो रहे हैं मार्केट में. इसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से बायर ने डायरेक्शन पकड़ लिया. सो दीज आर द स्टेज वेयर रिवर्सल में कम. पहले इस प्रकार के कैंडल दिखेंगे, फिर इस प्रकार के कैंडल दिखेंगे, फिर इस प्रकार के कैंडल दिखना चालू होंगे. अब जब प्राइस जो है अंडर वैल्यू हो चुका है, ठीक है, काफ़ी कम हो चुका है, रिस्पेक्ट उसका जो वैल्यू होना चाहिए उससे कम हो गया है, तो इस प्रकार के हमें कैंडलस्टिक दिखना चालू हुआ. Essentially, when a reversal week form at the extreme of the trend, the market is telling you that the trend either had stalled or is on the verge of a reversal. चाहे तो इस प्रकार के वीक कैंडल को देख करके हम समझ सकते हैं, चाहे तो मतलब कि ट्रेंड जो है उसको रोकने का प्रयास करा जा रहा है, या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है. Remember, the market auction higher in search of seller and lower in search of buyer. ठीक है, ऊपर चढ़ेगा सेलर को खोजेगा मार्केट, नीचे जाएगा तो बायर को खोजेगा मार्केट. तो सिंपल सा चीज़ है, मार्केट जब जब ऊपर जाता है अपने जो वैल्यू प्राइस से जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वहाँ पर सेलर से मुलाकात तो होगी ही होगी,
और जब प्राइस जो है अपने एक्चुअल वैल्यू से नीचे आएगा तो वहाँ पर उसे बायर से ज़्यादा बायर से मुलाकात होगी। तो सिंपल है कि नीचे बायर्स तो रहते हैं और ऊपर सेलर्स रहते हैं किसी भी प्राइस के। So I will in search of the seller and lower in search of the buyer. When the market overextends itself in search of the market participants, it will find itself out of value, which means responsive market participants will look to enter the market to push the price back towards an area of perceived value. This will help price find a value area for two-sided trade to take place. When the market finds itself too far out of value, responsive market participants will sometime enter the market with force, which aggressively pushes price in the opposite direction, essentially forming reversal weak candlesticks. This pattern is perhaps the most telling and common reversal setup, but requires steadfast confirmation in order to capitalize on its power. Understanding the psychology behind this formation and learning to identify them quickly will allow you to enter positions well ahead of the crowd, especially if you have spotted these patterns at potentially lower valued or undervalued or overvalued areas. पकड़ लिए ओवरवैल्यूड पे बना है तो भाई पकड़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की, वीक रिवर्सल के कुछ एग्जांपल्स की चार्ट के साथ में। तो अब हम लोग बिफोर वी मूव अहेड आई वुड लाइक टू मेंशन ए ट्रेमेंडस रिसोर्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू इन अपेंडिक्स बी। In this section, you will find the code that I have written for weak reversal system file name SYS weak REV. So you can quickly and easily find the trade where reversal opportunity along with the weak reversal system. I have also included the code for many of the system indicator and stop that I have created and used in my trading. I will discuss each of these snipped code. जो बनाया हुआ कोड है उसको जो है अपेंडिक्स बी में जाके देखिए इस किताब के। I will discuss each of these snippets of code in greater detail as we progress through the book and as it pertains to the material. Each of these scripts can be used to create fully mechanical trading system or simply provide the basic of the signal generated prospecting. This is truly powerful resource and I hope that it help you in your trading as much as it has helped me. तो अब देखना है कि इसका जो है इस वीक रिवर्सल के सिग्नल ऑफ द चार्ट रेड एंड ग्रीन ट्रायंगल आर फ्रॉम द एक्चुअल स्क्रिप्ट ऑफ द सिस्टम दैट वी विल डिस्कस विच प्रोवाइड अस विद विजुअल कंफर्मेशन दैट ए स्पेसिफिक सेटअप has met out certain for a long or short opportunity. However, just because a signal has fired doesn't mean that a trade is warranted. Instead, every signal should be scrutinized and confirmed by additional factor, which we have already begun to learn and will continue to learn as we move forward in the text. कहता है कि अगर कोई सिग्नल मिला है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड बन गया, उस सिग्नल को स्क्रूटिनाइज करना है एडिशनल फैक्टर की सहारा ले करके, तब हम लोग जो है उस ट्रेड की ओर बढ़ेंगे। आंख बंद करके सिग्नल दिखा कूद गए तो क्या होगा, उसे इस चार्ट के माध्यम से राइटर के द्वारा बताया जाए। सिग्नल तो यहाँ भी मिला है, सिग्नल तो यहाँ भी मिला है, सिग्नल यहाँ भी मिला है, सिग्नल यहाँ भी मिला है, यहाँ क्यों नहीं चला, यहाँ क्यों चला, यहाँ क्यों चला, ये राइटर्स के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, सिग्नल हर जगह फायर्ड हो रहा है बट ट्रेड हम यहाँ नहीं लेंगे। क्यों यहाँ लेंगे, क्यों यहाँ लेंगे, इसकी बात हम लोग अब करते हैं। लेट्स टेक a look at first example in the figure 2.6, which is 5-minute chart of the natural gas future contract. In this example, we are looking for 3:1 week to body ratio and a close percentage of 15%. That is, we are looking for a wick that is 3 times larger than the size of the body, and we also want the close of the bar to be in the top or bottom 15% of the candle. In this example, there are 5 candles that meet these criteria, which are highlighted by the signal on the charts. Instantly, I am drawn to the first long signal and the third short signal. Why? These signals formed while testing the outer boundaries of the day's initial balance. As you recall, or 4 or 6 types of trading days: typical day, trading range day, sideways day, expanded typical day. The initial balance will hold the entire day. So initial balance कब entirely hold रहता है इस प्रकार के डेज में? 6 टाइप ऑफ डेज में जो टिपिकल डे है, ट्रेडिंग रेंज डे है, साइडवेज डे है और एक्सपेंडेड टिपिकल डे है, इन 4 प्रकार के टाइप्स में इनिशियल बैलेंस जनरली होल्ड करके रहता है।
पूरे के पूरे दिन, और एटलीस्ट थ्रू आउट मच ऑफ द डे, और कम से कम पूरे दिन तो जरूर से जरूर. Therefore, when these 2 weeks reversal opportunities formed, there was typical market behavior confirmation behind the tests, which paved the way for nice entry opportunity. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइन ये खींच दीजिए यहाँ से, एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, और यहाँ बाई का सिनेरियो है, यहाँ सेल का सिनेरियो है. ये कैंडल हमें सेल के लिए बोलता है, और ये इधर का कैंडल हमें बाई के लिए. सो अब जो है यहाँ पर भी हम इधर की ओर हम नहीं ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज इट्स बिटवीन द IBH एंड IBL. तो ये सिग्नल हम इस सिग्नल के थ्रू नहीं जाएंगे, यहाँ इस सिग्नल के थ्रू भी नहीं जाएंगे, इस सिग्नल के थ्रू नहीं जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिग्नल हमें ट्रेड लेने के लिए कहता है, बिकॉज ये लोकेशन और कैंडलस्टिक दोनों यहाँ पर हमें ट्रेड लेने के लिए बोलता है. सेम हेयर. While the other 3 weeks reversal signal passes other setups criteria, some so far better than others. This due to many different factors, including whether price is above or below value. With at least two of the 3 signals, it seemed to be the case, which would have caused us to stay away from the signals. One easy method to help further confirmation for this type of setup, which may be a necessity in your trading trials with this pattern, is requiring the close price of the bar following the reversal big candlestick is to be lower than the low of the wicking candle reversal for long. In each of 3 signals that were not ideal, this simple creation would have kept you out of the trade, as the bar following the reversal big did not confirm the move. Coincidentally, the 2-week reversal pattern that worked out perfectly had the close confirmation of the second one. Our second example is a 5-minute chart of research motion. In figure 2.7 shows that the high and low during the day has highlighted by the week reversal setup. Moreover, each of the 4 weeks reversal candlestick fired signal help to identify move at key points in the chart. As I mentioned before, the sticks to this setup is to understand the interrelated component of the candlestick, while also having the ability to decipher when to trust what the pattern is telling you. For this example, I used a 3.5:1 week to body ratio with a percentage of 25%, close percentage जहाँ पे 25 रहना चाहिए, और हमारा 3 week जो है वो कम से कम 3.5 गुना होना चाहिए, which brought this opportunity to the forefront. If I were to loosen the parameter to a 2:1 ratio with the close percentage of 40%, my chart would become littered with meaningless signal. You must be able to identify the right setup at the right point in the chart to maximize your potential with this setup. मतलब आपको अपना सेटअप इस ढंग से बनाना है कि सिग्नल कम मिले लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो. तो इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी कुछ सिग्नल मिला है, यहाँ भी कुछ सिग्नल मिला, यहाँ सिग्नल मिला है, यहाँ सिग्नल मिला, यहाँ सारे के सारे सिग्नल्स पे हमें ट्रेड नहीं लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे पे नहीं लेना है जब तक ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट लोकेशन वाइज हमें पता नहीं रहे, या पिवोट पॉइंट्स को हम लोग पिवोट पॉइंट और मनी जोन का के आधार पर हम लोग लोकेशन डिसाइड ना करें, तब तक हम लोग किसी भी ट्रेन पर जा कर के नहीं बैठेंगे. ट्रेन जब तक स्टेशन पे आएगी नहीं, हम लोग उस ट्रेन पर नहीं बैठेंगे. इवन ट्रेन का इंजन किस डायरेक्शन में लगा है, हमें जाना किस डायरेक्शन में है, अगर वो हमें दिखता है कि ट्रेन ने इंजन जिस डायरेक्शन में लगा रखा है, उसी डायरेक्शन में हम अपना ट्रेड पंच करेंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेन के साथ साथ हमें स्टेशन पर ही ट्रेन को पकड़नी है. बीच रास्ते में चलती ट्रेन को पकड़ेंगे, एक्सीडेंट होना लाजमी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप. एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप के बारे में राइटर्स क्या करना चाहते हैं. द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप इज ए फैबुलस सिग्नल दैट आई हैव बैक tested over countless years of data on many instruments, different time frame, and using various trade management methodologies. The results have always been highly favorable. Needless to say, this setup remains a key staple of my trading arsenal. The extreme reversal setup is a classic rubber band trade. When a rubber band is stretched to its limit and then released, it snaps back in the direction from whence it comes. When we are looking to the trade, the snap back reversal. With this setup, the basic setup occurs when an extremely large candle forms that eye about twice the size of the average candlestick. While this candle may indicate that a continuation will be seen, the second bar of the pattern does not confirm a continuation, and instead in an opposing candle that signals an upcoming reversal.
When this occurs, you have a fantastic opportunity to buy below value or sell at a premium. So अब हम लोग देखते हैं the extreme reversal setup look to capitalize on over extended situation in the market as responsive buyer and seller will enter the market to push the price back in the opposite direction. So ये सेटअप का हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप राइटर के द्वारा जो बताया जा रहा है इसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है. लेट्स टेक अ क्लोज लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप इन द फिगर 2.8 illustrates bullish and bearish extreme reversal example. The first bar of the two bar setup is the extreme bar which is the basic for the setup. This bar can be anywhere from 50 to 100% larger than the average size of the candle in the look back period. This figure will vary, however, depending on the volatility of the given market that you are trading. If you are trading a market with extremely low volatility, then you will likely to need to see large extreme candle to properly qualify this candle. Conversely, this in market with high volatility, you may not need to adjust the size of the you may need to downward adjust the size of the extreme bar. मतलब एक बड़ा सा कैंडल चाहे बुलिश या बियरिश कैंडल हमें चाहिए और दूसरे दिनों से जो है 50 to 100% बड़ा, मतलब 2 गुना या 1.5 गुना से 2 गुना के बीच में जो है हमें साइज मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन. ठीक है, तो 2-3 दिन के पीछे हम लोग जा करके देख सकेंगे और उसमें विजुलाइज करेंगे कि जनरल कैंडल का जो साइज है उससे 1.5 से 2 गुना हमें साइज मिलना चाहिए. और उसके बाद जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा. द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू कंसीडर while judging the extreme bar setup of the pattern is the percentage of the total bar, that is the body of the candlestick, that is what percentage of the total range of the bar does the body of the candle encompass. This is a little tricky because you would like to see a high percentage of the candle covered by the body, but not so high as to discourage a potential reversal. I will typically allow any signal to pass that has a simple majority of coverage by the body. In other words, any percentage over 50% will usually suffice, but I will keep a close eye on any percentage that is above 85%. Why? मतलब इसको जो है इस पूरे कैंडल का 85% को कवर अप कर दे. मतलब अगर मार्केट चढ़ा कस के बड़ा कैंडल बनाया और उसको एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसका 85% के नीचे क्लोज दे, या फिर एक बड़ा कैंडल बियरिश कैंडल बनाता है और नेक्स्ट जो कैंडल है उसको 85% को उसके इस कैंडल बड़े वाले कैंडल का 85% यहाँ पर 15% को जो है मोर देन 15% को कवर अप कर लेता है, तो इस केस में हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं. सो मोर देन 15% पॉइंट टू थिंक अबाउट. If for a moment if the extreme bar has a close percentage of over 90%, मतलब जो close bar है उसका जो close percentage है over 90% है, there is a good chance that each bar could indeed lead to a continuation in the current direction. Therefore, you may be enter the market during resting period ahead of a continuation. However, the extreme bar has 60% coverage by the body. This is a better indication that a reversal may indeed occur, as a reversal may have already begun intra-bar, especially if the weak proportion of the candlestick has formed at the end of the candle where the reversal is to occur. हाँ, तो ये जो कैंडल साइज है इसका ये हमारा जो है मिनिमम 15% होना चाहिए. इधर का वीक जो है और बॉडी 85% चलेगा, इधर 15, मतलब इधर का झटका दे चुका है और उसके बाद दे रहा है, मतलब 15% तो इधर खाया ही और इधर खा रहा है कितना. तो अब हम लोग बात करते हैं द सेकेंड बार ऑफ द ये पहला बार का भी बात चला. अब हम लोग बात करते हैं जितना ज़्यादा लंबा वीक इधर बनेगा उतना अच्छा है. पहला पॉइंट यही था. अब हम नेक्स्ट आगे भी बात करेंगे. द सेकेंड बार ऑफ द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप शुड बी द अपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल ऑफ द पैटर्न, दैट इज इफ द फर्स्ट बार ऑफ द पैटर्न इज बुलिश और ग्रीन और वाइट, when the second bar of the pattern should be bearish, red or black. Obviously, the color of the bar will depend upon the charting software you use. But you get the point. The second candle of the setup is just as important as the first, as this candle will either lead to a continuation or signal or reversal. Many times this candle will a rather small compared to a previous price activity. However, this is not always the case. As a matter of fact, if the bar strongly opposes the first, the odds of a reversal increases. That is, if the first bar of the pattern is a big full-bodied candle that opposes the first, the market may be well on this way to clear the reversal opportunity. So pattern का अब हम लोग समरी पढ़ेंगे.
कि पैटर्न किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका 3 पॉइंट है। तो पहला 2 बार यहाँ का सेटअप है, ये रिवर्सल सेटअप। तो पहला बार इज अबाउट 2 टाइम्स लार्जर देन द एवरेज साइज ऑफ द कैंडलस्टिक व्हेन यू लुक बैक पीरियड। पीछे देखो 1-2 सेशन और कम से कम 2 गुना रहना चाहिए। द बॉडी ऑफ द फर्स्ट बार ऑफ द पैटर्न शुड encompass more than 50% of the bar's total range, but usually not more than 85%। कहता है जो फर्स्ट बार का जो बॉडी है, पैटर्न शुड encompass more than 50%, 50% encompass हो जाना चाहिए ऑफ द बार्स टोटल रेंज। ठीक है, टोटल रेंज का 50%, बट यूजुअली नॉट मोर देन 85%। मतलब जो बॉडी है अगर 50% पे आ गया है, बहुत अच्छी बात है। 50 से लेकर के हम लोग शुड इनकम मोर देन 50%, 50% ऑफ द टोटल रेंज, बट यूजुअली नॉट मोर देन 85। मतलब जो बॉडी बनेगा वो पूरे रेंज का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 85% से कम होना चाहिए। नीचे भी वीक मिलना चाहिए बियरिश में, और ऊपर वीक मिलना चाहिए बुलिश में। ठीक है, मिनिमम 15% का वीक मिलना चाहिए, लेकिन वह जो परसेंटेज है वीक का वो 50% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है पैटर्न समरी का, द सेकेंड बार जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड बार ऑफ द पैटर्न अपोजेज द फर्स्ट बार। मतलब जो सेकेंड बार है पैटर्न का वो पहला बार को अपोज करेगा। ठीक है, ये अपोज कर रहा है। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या है, इफ़ द फर्स्ट बार ऑफ द पैटर्न इज बुलिश, अगर पहला जो है बार जो है अगर बुलिश है और उसका क्लोज जो है ओपन से ज़्यादा है, ओपन से ज़्यादा होना चाहिए, देन द सेकेंड बार मस्ट बी बियरिश, इसका जो क्लोज होगा वो ओपन से कम होना चाहिए। If the first bar is bearish, that is close is less than open, then the second bar must be bearish, that is close is greater than open। और इस पैटर्न का अब हम लोग साइकोलॉजी को समझेंगे। इस प्रकार का जो पैटर्न है ट्रेडर्स बायर और सेलर के द्वारा कैसे जनरेट होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो पैटर्न साइकोलॉजी की जब बात कर रहे हैं एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप का, तो इसमें हम लोग देखते हैं द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप इज ए clever pattern that capitalizes on the ongoing psychology pattern of the investor, trader and institution। Basically the setup look for a extreme pattern of selling pressure and then look a fade this behavior to capture bullish move higher reversal for shorts। In essence this setup is visually pointing out oversold and overbought scenario that forces responsive buyer and seller to come out of the dark and put this money to work. Price has been overextended and must be pushed back towards the fair area of the value, so two sides trade can be take place। This setup work because many normal investor or casual trader ahead for exist once their trade begin to move sharply against them। When this happens, price become extremely overbought and oversold, creating value for responsive buyers and sellers। Therefore savvy professionals will see that price is above or below value and will seize the opportunity। When the scared money is selling, the market money begins to buy and vice versa। Look at this way, when the market sells off sharply in one giant candle, traders that were shorts during the drop begin to cover their profits positions by buying। Likewise the traders that were on the sideline during the sell-off now see value is lower price and begin to buy, thus doubling up on the buying pressure। This help to spark a sharp deep bottom reversal that pushes price in the opposite direction back towards their fair value। तो ये हमारा था पैटर्न साइकोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स का, एक्सट्रीम रिवर्सल पैटर्न जो है उसके एग्जांपल्स। The extreme reversal setup is very powerful pattern that occurs in the market due to basic trader psychology। As such, it is extremely important to know when this pattern is developing। I have written code to help me quickly identify this pattern in the market, which I have included for you in Appendix B। Let's take a look at how the extreme reversal system, file name SYS Extreme REV, help to highlight the key reversal opportunities in the market। In the figure 2.9 show a 15-minute chart of shareholding corporation। The stock opened the day with the gap up but quickly filled the gap in the first 15-minute bar of the candle, forming a giant bar that is easily 2 or 3 times larger than the average size of the bar preceded it। However, despite the bearish nature of the candlestick, the second 15-minute bar does not confirm a continuation lower। Instead this candle is bullish, C is greater than O, and eventually lead the stock higher the rest of the candle। खुला और काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर बाइंग प्रेशर बना
और ये प्राइस ऊपर की ओर मूव करके लेकर के चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इन दिस एग्जांपल shares holding open the day with the early weakness as responsive seller pushes price back towards a perceived area of fair value. However, once price reached the $53 zone, responsive buyer entered the market, which pushed price back towards the top of the day's initial balance. When the upper boundary of the initial balance was broken, initiative buyer entered the market and continued to push the price higher. This entry process was sparked by the extreme reversal setup that formed in the first 30 minutes of the day. So now one interesting fact about this pattern is the way that is consistently formed at the beginning of the day, especially in the first 30 minutes of the session. Many times the market will open the day with a great deal of energy, but the move fizzles within 30 minutes, creating a reversal opportunity. As you recall, the first 30 to 60 minutes of the day is when the market establishes the session initial boundaries. Part of this process may involve developing an extreme reversal pattern that suits price in the opposite direction. It is not surprised that the major economic reports are oftentimes released at 10 a.m., which coincided perfectly with the development of this pattern. Take a look at figure 2.10, where shows a 15-minute chart of Amazon. In this example, you see that the extreme reversal setup occurred 3 days in a row, with two of those instances occurring within the first 30 minutes of the session. In each instance, price overextended itself, causing responsive participants to enter the market in order to regulate price. This setup was not found at any other time during 3-day stretch, which paves the way. The theory of the trading this pattern only at the beginning of the day. सो एट द यहाँ हम लोग चार्ट में देखेंगे तो 17 तारीख को एक पैटर्न बना, 18 को बिगिनिंग ऑफ द डे पैटर्न बना, फिर 19 को भी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे ही पैटर्न बना। तो सारे के सारे केसेस में ये ज़्यादातर एट द बिगिनिंग ऑफ द डे ही पैटर्न बनता है। एक्सट्रीम सेटअप, तो एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप साइंस व्हेंस इट वाज डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस ट्रेंड में ये मार्केट प्रीवियसली चल रहा है उसी ट्रेंड में अगर ये बनता है, सो इट्स बेटर टू टेक, इट्स रियली बेटर टू टेक द एक्सट्रीम सेटअप साइंस। मतलब ये चमकता है कब, जब यह डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेंड। व्हेन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही एक पंच है ये, जो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसको बोल सकते हैं। व्हेन ए मार्केट इज ट्रेंडिंग, दिस पैटर्न कैन फॉर्म ड्यूरिंग द पुल बैक फेज ऑफ ए ट्रेंड, thereby allowing you to enter the market at a better value alongside the smart money. To illustrate this point, take a look in the figure 2.11, which is the 15-minute chart of the community available community. The extreme reversal setup formed 2 consecutive days during the retracement phase of a bullish trend. Each pullback was highlighted by the extreme reversal pattern, which allowed us to easily enter the market in the direction of the existing trend at the better value. The important part of this scenario is the fact that the pattern was able to signal us to a profitable entry point that was below value, thus allowing us to enter the market alongside responsive buyers. When a stock is in a clear trend, responsive participants will be looking to enter the market at a favorable entry point. Using this pattern to buy the dips in an uptrend and sell the reaps in the downtrend will allow you to align your position with the right side of the market. It is important to note, however, that while trading this pattern can be highly advantageous with a trend, it can also lead to a false signal when it fires against an aggressive trend. Be smart and trade when the right circumstances present themselves. So यहाँ भी देखेंगे तो 16 एक ट्रेंड चला रहा था और 16 तारीख को एक पुलबैक हुआ और इस पुलबैक पे यहाँ सिग्नल मिला और ये काफ़ी अच्छा हुआ। उसी प्रकार से 17 को भी एक पुलबैक आया, ये बड़ा सा कैंडल बना, उसके बाद इसका रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनता है और एक पुलबैक आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप में से एक है, जो एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेटअप में से, चार्ट में भी हम देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द आउटसाइड रिवर्सल सेटअप। आउटसाइड मतलब जो इसके बाहर बन रहा है, आउटसाइड रिवर्सल सेटअप। तो आउटसाइड रिवर्सल सेटअप की जब हम लोग बात करते हैं, so out of all the steps in this chapter, the outside reversal setup is probably the most fun to trade. When I see this setup developing, I envision a child on a trampoline, which is probably the reason I associate fun with this setup.
For a child for spring high into the air, he must first force the trampoline bounce mat to go down. The further the child forces the mat go down, the higher he will spring into the air. This analogy perfectly embodies the outside reversal setup. Essentially, the market will push price lower because shooting higher and will push price higher before selling off. That's not true. The outside reversal setup take advantage of the market tendency test price level beyond current value before a reversal can occur. So कहता है the outside reversal setup take advantage of the market tendency to test price level beyond the current value before a reversal can occur. अब इसका जो पैटर्न स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनता है उसको देखेंगे. कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है. The outside reversal setup is basically a hybrid between the engulfing pattern and the traditional outside day pattern. However, unlike the engulfing and outside day pattern, I am not concerned about the current candle's body engulfing the period day body. Instead, I am more concerned with the high and low and low of the two bar setup. More precisely, for a bullish outside reversal condition to exist, the current bar's low must be lower than the period bar's low, and the current bar close must be higher than the period bar high. And along the same line, for a bearish outside reversal setup to exist, the current bar's high must be greater than the period bar's high, and the current bar's close must be lower than the period bar low. There are several variations in this types of setup, but this is one of that I find to be particularly useful and predictive when playing key reversal situations. In figure 2.12 illustrates the outside reversal setup. हुआ क्या, मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, एक कैंडल बनता है बियरिश कैंडल और उसको एक बड़े कैंडल के द्वारा पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया जाता है. इस केस में क्या है कि ये सेटअप आउटसाइड रिवर्सल सेटअप बन रहा है. उसी प्रकार से मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रही है और इसी लोकेशन पर एक बड़ा सा कैंडल बनता है जो उसके पहले कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लेता है. इसमें देखा इसका पॉइंट क्या है कि इस कैंडल जो पहला कैंडल है और जो दूसरा कैंडल है उसके साथ रिलेशन ये है कि दूसरा कैंडल का लो जो है वो पहले कैंडल से नीचा है, लेकिन इसका जो हाई है वो पहले कैंडल से काफ़ी ऊपर है. उसी प्रकार से बियरिश में देखेंगे तो बियरिश में जो पहले कैंडल का जो लो होगा, जो हाई होगा वो दूसरे कैंडल से कम है, मतलब दूसरे कैंडल का हाई पहले से ज़्यादा है, बट इसका लो जो होगा वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम होगा. मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की ओर आ गया. इसके अपोजिट यहाँ से मार्केट नीचे गया है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और उसको पूरी तरीके से इनगल्फ करके ऊपर आ गया. ये सिनेरियो है. इन एडिशनल रिक्वायरमेंट आई लाइक टू include is a bar size qualifier which requires the engulfing bar be a certain percentage larger than the average size of the bar in the look back period. This creation allows me to further qualify the pattern as a variable reversal candidate depending on the volatility of the market I am trading. I like the engulfing bar to be between 5 and 25% larger than the average size of the bar in the look back period. Additional criteria can be added on this setup to qualify the validity further, but I find that this usually dilutes my field of candidates. It qualifies that take into account increased volume while powerful would fall under this category. इसका पैटर्न समरी यह है कि the engulfing bar of the bullish candle, engulfing bar of a bullish outside reversal setup has a low that is below the period low. मतलब पहले वाले से ज़्यादा लो है दूसरा का, लेकिन उसका जो एंड एक क्लोज दैट इज एबव द पीरियड, लेकिन जो क्लोज होगा ऊपर होगा. नीचे तो गया लेकिन वही ट्रम्पलिन वाला कंसेप्ट, नीचे गया लेकिन ऊपर की ओर बाउंस कर दिया. ये है पैटर्न इसका. और दूसरा जो पैटर्न समरी है, द इनगल्फिंग बार ऑफ ए बियरिश आउटसाइड रिवर्सल सेटअप हैज ए हाई दैट इज एबव द पीरियड बार्स हाई एंड द क्लोज दैट इज बिलो द पीरियड बार्स लो. द इनगल्फिंग और तीसरा जो पॉइंट है, द इनगल्फिंग बार इज यूजुअली 5 to 25% लार्जर देन द साइज ऑफ द एवरेज बार इन द लुक बैक पीरियड. अब बात करते हैं ये इस प्रकार का जो इसका ये जो पैटर्न बनता है उसकी साइकोलॉजी के बारे में. तो इसकी जो साइकोलॉजी है, द पावर बिहाइंड दिस पैटर्न लाइज इन द साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेडर इन्वॉल्व्ड इन दिस सेटअप. इफ यू हैव एवर पार्टिसिपेटेड इन ए ब्रेकआउट टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओनली टू हैव ए मार्केट रिवर्स शार्पली अगेंस्ट you, then you are familiar with the market dynamics of this setup. What exactly is going on at these levels? To understand this concept is to understand the outside reversal pattern. Basically, market participants are testing the waters above resistance or below support to make sure there is no new business to be done at these levels.
When no initiative buyers or seller participate in range extension, responsive participants have all the information they need to reverse price back towards a new area of perceived value. As you look at bullish outside reversal pattern, you will notice that the current bar's low is lower than the period bar's low. Essentially, the market is testing the water below the below recently established low to see if a downside follow through will occur, then no additional selling pressure enter the market. The result is a flood of buying pressure that causes a springboard effect, thereby shooting price above the period bar's high, creating the beginning of the bullish advance. If you recall the child on the trampoline for a moment, you will realize the child has to force bounce mat down before he could spring into the air. Also, remember Jennifer, the cake baker. She initially pushes price to 20 per cake. When she sent a flood of order into the shop, the price of buying pressure eventually sent the price of her cake to 35 rupees. Basically, the price had to test so 20 level before they could reach 35. Let's analyze the outside reversal setup in a different light of a moment. One of the reasons I like this setup is because of the two bar pattern reduces into the big reversal setup, which we covered earlier in the chapter. If we are not familiar with the candlestick reduction, the idea is simple. You are taking the price data over two or more candlestick and combining them to create a single candlestick. Therefore, you will be taking the open, high, low and close of the bars in question to create a single composite candlestick. Take a look in the figure 2.13, which illustrates the candlestick reduction of the outside several setup, essentially taking the highest high and the lowest low over the two bar period gives you the range of the composite candlestick, then taking the opening price of the first candle and closing price of the last candle will finish off the composite candlestick depending on the structure of the bar of the outside reversal setup. The result of the candlestick reduction will usually to be transformation into a weak reversal setup, which we know to be quite powerful. Therefore, in many cases, the psychology of the outside reversal pattern basically demonstrates the inherent psychology traits of the weak reversal pattern. This is just another level of analysis that reinforced by my belief in the outside reversal setup. So here अगर हम देखते हैं तो इन दोनों सेटअप को अगर मिला दिया जाए तो इस प्रकार का सेटअप बन के आता है, मतलब कि हाईली बुलिश इस प्रकार के सेटअप को मिला दिया जाए इस प्रकार का सेटअप बन के आता है। आउटसाइड रिवर्सल का जो एग्जांपल्स है हम लोग अगर देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से, तो इस चार्ट में आउटसाइड रिवर्सल का एग्जांपल्स वही इनिशियल ऑफ द डे हम देखते हैं तो यहाँ हमें आउटसाइड रिवर्सल सेटअप का एग्जाम्पल मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। So we will cover next part of this chapter in the next video.